In the last class, what we talked about, what was Namitan? In the last class, we started off with the transport and plants, और हम लोगों ने क्या बात करी थी? We talked about the vascular bundles, right? कि हमारे पास what basically transports the substances in the plants are these two vessels that are called as xylem and phloem. The xylem vessels are dead vessels that transport water and mineral ions in one direction only, that is from the roots towards the leaves, right? While whenever we talk about the phloem vessels, these are living vessels that transport the assimilates. What were the assimilates again? They were the products of photosynthesis that could be used for metabolism. Now, it could be glucose, it could be sucrose, it could be amino acids, right? But where do they transport it from? They transport it from the source all the way towards the sink. What is a source and what is a sink? So parts of the plant from where the substrates are transported, they're called as the source, and the parts of the plant to where the assimilates are transported are called as sink. ठीक है? आप इसको समझिएगा कि मतलब what do we mean by sources and the sink and why a source and a sink uh, doesn't have to be the same place. ठीक है? Or why are they can be changed. ठीक है, अब इसको देखो कहने का मकसद क्या है. Let's say we draw for ourselves a tree. Right, so the upper portion of the tree represents the leaves, while at the bottom we have the roots. For example, हमारे पास जो ये वाला जो region है ना, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास roots हैं. ठीक है? अब now what happens? Now what happens? अब मैं क्या करता हूँ? मैं इस tree को ना दो हिस्सों में divide कर देता हूँ. So I'm just going to divide into two parts. One representing this particular plant or this tree during the कौन सा वाला time? During the daytime, and the other representing the very same tree during the night. ठीक है? अच्छा, अब अगर हम लोग यहाँ देखें, during the day we studied this when we were talking about photosynthesis, that during the day the rates of photosynthesis, the P represents photosynthesis, right? So the rates of photosynthesis are more than the rates of respiration. ठीक है? तो अब हमारे पास क्या हो रहा है? The leaves, what they are doing is through photosynthesis, they are producing excess glucose. Walaikum assalam, beta. So what they're doing is they're producing excess what? Excess glucose. Up this glucose would be used for the process of respiration, but excess of this glucose in the leaves, if there's an excess of this glucose in the leaves, it will be converted, or rather it would be condensed to form what? Starch. ठीक है? अच्छा, अब at the very same time ये जो हमारे पास ग्लूकोज है, this glucose that we have, right? दिस ग्लूकोज इज स्टिल इन एक्सेस. अब हमारे पास लीव्स के अंदर स्टार्च और स्टोर नहीं हो सकता, स्टार्च स्टोर करने की जगह खत्म हो गई है. सो व्हाट्स गोना हैपन? दिस ग्लूकोज would be transported all the way towards the roots, where the very same glucose would also be used for the process of respiration, and most of it would undergo the process of condensation and be stored as starch in a much larger quantity. बात समझ में आ रही है? तो कहने का मकसद क्या है हमारे पास कि ड्यूरिंग द डे glucose is basically getting stored, right? Because why? Because it's an excess. It's stored mostly in the roots and the stem, where there's a lot of space to store glucose. ठीक है? अच्छा, लेकिन let's say during the night, for example, शाम के 6 बजे से रात के 12 बजे तक, the rates of respiration become more than the rates of photosynthesis. But again, there's no light, there's no sun, right, during the night. So what's going to happen? कि अब और ग्लूकोज नहीं बन सकता, लेकिन लीव्स को तो रिस्पायर करना है. So what's going to happen? What's going to happen? जो भी starch, again, so this glucose is still used for the process of respiration, right? लेकिन अब हो क्या रहा है हमारे पास? This glucose that we have
it has, or it's starting to run out because it's no longer being produced. So now what's gonna happen? जो सुबह के टाइम start store हुआ हुआ था ना, at night the plants are going to break it down. They're going to hydrolyze it back into glucose. लीव्स के अंदर इतना ज्यादा स्टार्च स्टोर नहीं होता. लेट्स से अज्यूमिंग कि हमारे पास लीव्स में जितना भी स्टार्च स्टोर था वो शाम के 6 बजे से रात के 12 बजे तक सारा का सारा यूजअप हो गया. Up now in the leaves, there is no starch, there is no glucose, hence the leaves can also not carry out what? They can also not carry out photosynthesis. Sorry, respiration. ठीक है? Why can they not carry out respiration? Why is there so less glucose? क्योंकि रात के अंदर तो photosynthesis हो ही नहीं रहा. So what's gonna happen? अब leaves को अगली सुबह तक तो survive करना है ना? Because again, if the leaves will be out of this glucose, if they will not be able to respire, they are going to die. Are we getting this? So now what happens is, जो सुबह के टाइम रूट्स ने स्टार्च स्टोर करा हुआ था ना, वो एक्सेस में था. इट वाज इन अ मच हायर क्वांटिटी. अब उसको वो हाइड्रोलाइज कर देगा ग्लूकोज के अंदर, सो दिस ग्लूकोज कैन बी यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन. The excess glucose will now be transported towards the leaves. बात समझ में आ रही है? तो देखो हो क्या रहा है. दिन के टाइम ड्यूरिंग द डे, since the rate of production of glucose, the rate of photosynthesis was higher, ग्लूकोज लीव्स के अंदर भी स्टोर हो रहा था इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, और वो रूट्स के अंदर भी स्टोर हो रहा है इन फॉर्म ऑफ स्टार्च. उस रूट्स और स्टेम में आगे हम लोग देखेंगे. देयर इज अ पर्टिकुलर टिश्यू दैट वी कॉल एज कॉर्टेक्स. Cortex contains, or cortex is there for the storage, right? Or the storage of the glucose. So excess glucose, whatever the excess glucose that the leaves could not hold, वो सब कहाँ हमारे पास स्टोर हो रहा है? वो हमारे पास रूट्स में स्टोर हो रहा था. रात के टाइम क्या हो रहा है? क्योंकि हमारे पास रेट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कम या नॉन एग्जिस्टेंट हो गए हैं, तो सुबह के टाइम हम लोगों ने जो भी स्टार्च बनाया था उसको सब ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया लीफ ने, और उसको कौन से वाले प्रोसेस के लिए इस्तेमाल कर दिया? फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. Now, during the night time, whatever starch that was stored in the roots would once again be converted into glucose. So the roots themselves can respire, and this glucose would go towards the leaves, where the leaves would also use it to carry out respiration. बात समझ में आ रही है? Does anyone have any problems so far? ऑल राइट, गुड इनफ. तो अब मुझे एक बात ये बताओ. ड्यूरिंग द डे टाइम द ग्लूकोज इज मूविंग फ्रॉम द लीव्स टुवर्ड्स द रूट्स, राइट? तो हमारे पास सोर्स क्या हो जाएगा और सिंक क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द सोर्स ड्यूरिंग द डे टाइम? वालेकुम अस्सलाम. The leaves are going to, during the daytime, the leaves are going to act as a source, while the roots are going to act as a sink. ठीक है, very good. तो देखो, what was the source in the sink again? Parts of the plants from where, जहां से हमारे पास एसिमिलेट्स मूव कर रहे हैं वो सोर्स है, और जिस तरफ एसिमिलेट्स मूव कर रहे हैं वो हमारे पास सिंक है, राइट? तो इसी तरीके से अगर हम लोग एट इफ वी वर गोइंग टू लुक एट द वेरी सेम प्लांट ड्यूरिंग द नाइट टाइम, अब हमारे पास डायरेक्शंस रिवर्स हो गए. अब हमारे पास क्या हो रहा है? The glucose is moving from the roots all the way towards the leaves. So during the ride, very good Laiba, very good Barira, हमारे पास roots are going to act as the source while the leaves are going to act as a sink. Make sense? So, but this was a bit about the source and the sink that I had to, revise before we move on with that actual transport mechanism. ठीक है? अच्छा, अब देखो. अब one more thing before we talk about, or well, before we start off with the actual transport. हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास नंबर वन, एक बात याद रखिएगा, स्टेम जो होता है ना, उसका डायमीटर बड़ा होता है. द स्टेम इज लार्जर इन डायमीटर कंपेयर टू द रूट्स.
राइट। हम लोग क्या देखते हैं कि क्योंकि अगेन जो लीफ होता है वो, सॉरी, द प्लांट जो होता है बेसिकली उसका स्टेम एंड द रूट्स बेसिकली सर्कुलर, राइट। तो many roots आर मेकिंग अप अ सिंगल स्टेम, ये बात याद रखिएगा। तो फॉर दैट रीजन, एंड अगेन, the diameter of the roots is much smaller than the diameter, या फिर the girth of the roots is much smaller than the girth of the stem, ठीक है। Remember this. Why am I telling you this is because what before we can talk about the transport of water or anything, what we need to know is we need to know about the tissues that are present in both the roots and the stem, तकरीबन सेम ही होता है। आगे जाएंगे हम लोग लीफ के टिश्यूज को भी दोबारा रिवाइज करेंगे, द वेरी सेम टिश्यूज, द मेसोफिल्स, द एंडोडर्म, द एपिडर्मिस, द वेस्कुलर बंडल्स, द पेलिसेड, द स्पंजी मेसोफिल्स, द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस, द कार्ड सेल्स, जो हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के अंदर करे थे। फिलहाल we just need to know the tissues of the stem and the roots. Again, I'm going to draw them to the same scale. मैं एक जैसा बनाऊंगा, लेकिन ये बात याद रखिएगा, the diameter of the stem will always be larger than that of the roots, ठीक है। अच्छा जी, now अब हम लोग बात करते हैं, let's talk about tissues present in number one, roots and stem, राइट। अब तकरीबन दोनों के अंदर ना सेम टिश्यूज होता है, ठीक है। कैसे? No, plants don't do that. They don't develop disorders or deficiencies, such as there's no reported case so far। अगर लाइट है तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, मूविंग ऑन। सो अब लेट्स से this is the diameter of the root that I'm drawing, and अगेन स्टेम को भी हम लोगों ने तकरीबन एक ही डायमीटर का बनाया है, बट इन रियलिटी व्हाट वी नीड टू नो इज द डायमीटर ऑफ द रूट विल बी लेस देन दैट ऑफ द स्टेम, ठीक है। अच्छा, कम बैक हियर, हमारे पास द इंपॉर्टेंट लेयर्स दैट वी हैव आर थ्री, ठीक है। In both the stem and the roots, we are going to have an outer protective layer, right? मेरे पास एक आउटर प्रोटेक्टिव लेयर इधर आ गई, हमारे पास स्टेम के अंदर भी एक आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होगी, ठीक है। दिस आउटर प्रोटेक्टिव लेयर दैट वी हैव इज व्हाट वी कॉल एज एन एपिडर्मिस। सो दिस लेयर दैट वी हैव इज कॉल्ड एज एन एपिडर्मिस, ठीक है। जिस तरीके से हमारे पास एक आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, we also have an inner protective layer. Now let's say by that inner protective layer something like this, right? यहाँ भी हमारे पास वही वाली इनर प्रोटेक्टिव लेयर आ गई, राइट। सो व्हाट इज दिस इनर प्रोटेक्टिव लेयर विल बी कॉल्ड एज, बाहर वाली प्रोटेक्टिव लेयर वाज एपिडर्मिस, तो ये इनर हमारे पास प्रोटेक्टिव लेयर कौन सी वाली डर्मिस हो जाएगी? एंडोडर्मिस, ये रही, राइट हियर, राइट हियर, ठीक है। अच्छा, इस एपिडर्मिस और इस एंडोडर्मिस के बीच के अंदर हमारे पास ये एक टिश्यू आ रहा है। एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में हमारे पास ये एक टिश्यू आ रहा है। दिस इज बेसिकली द टिश्यू दैट does what? That actually helps in this acts to provide support. At the very same time, it acts the storage organ in the roots and the stem. And this tissue that we have is what we call as the cortex, right? सो अगेन हमारे पास स्टेम्स और रूट्स के अंदर कितनी लेयर्स हो गई? तीन लेयर्स हो गए, राइट। सो वी हैव द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर एपिडर्मिस, द इनर प्रोटेक्टिव लेयर एंडोडर्मिस, एंड बिटवीन द एपी एंड द एंडोडर्मिस वी व्हाट वी हैव इज अ लेयर फॉर स्टोरेज ऑफ द excess starch, along with the along with that it also provides support, and that layer is what we call as the cortex, right? That layer of tissue that we have is called as cortex. अब इसको देखिए, अब होता हमारे पास क्या है? I think I just want to show you one thing. Oh, I did not take a screenshot of it. Okay.
खैर, अब देखो होता क्या है, हमारे पास रूट्स के अंदर ना एक ही, फॉर एवरी रूट वी यूजुअली हैव अ सिंगल वेस्क्यूलर बंडल, राइट? अब उस वेस्क्यूलर बंडल के अंदर we have this X shaped, this cross shaped, कौन सी वाली vessels? We have the xylem vessel, right? It's hollow on the inside. It's thickened, it's lignified. तो इसको थोड़ा thicken भी कर देते हैं हम लोग so that we know that it in fact is the xylem vessel, right? Right? अच्छा जी. Surrounding the xylem vessels are what are the phloem. इस तरीके से. Right, AS level में जाओगे तो कैम गेम भी पढ़ोगे, लेकिन again not a concern right now. So right here, these tissues in green or is are making up what? They're making up the phloem vessels. ठीक है. अच्छा अब देखो again reminding ourselves, many roots are making up a single stem. So while the roots have a single vascular bundle, the stem does not. The stem has many vascular bundles. I'll show them to you. हम लोग कैसे zoom करते हैं अगर हम लोग आसान करें अपने लिए. So you know the vascular bundles in the stem, they look like ice cream cones. So the xylem vessel, which is always on the inside, जो अंदर की तरफ होता है, that kind of represent or is represented by the waffle cone, right? And surround or on top of the xylem vessel हमारे पास वो जो आइसक्रीम का स्कूप है, let's say the pista flavored ice cream or a mint, नहीं mint flavored would not sound right, right? ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फ्लोएम हो जाएगा. So basically the vascular bundle exists like this. Many vascular bundles are joined together by other tissues. उसको नाम याद नहीं रखना. सो अगेन अगर हम लोग देखें तो ये भाई जो रेड वाला वॉफल कोन है, that is representing the xylem vessel, and this scoop of ice cream that we have on the top is representing the phloem vessel, right? तो हमारे पास एक उसके अंदर स्टेम के अंदर बहुत सारे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं. नाउ I'll show you how they look. लेकिन उससे पहले एक चीज देखो, ये जो स्पेसेस है ना बीच के अंदर, ये खाली नहीं होते, इसमें पित होती है. पित क्या होती है? बस एक जगह भरने वाले cells हैं हमारे पास. Now I'll show you how they look like. I'll show you how they look like. So if you would look here, I think I'll have the stem first. Here the stem. So this is how the stem looks like, right? So you see these ice cream cones that we have? These are what the vascular bundles. ठीक है. अब अगर हम लोग यहाँ देखें तो हम लोग क्या देखें ना, ये जो thickened vessels है ना अंदर से जो hollow सी हुई हुई हैं, ये हमारे पास xylem vessels हैं. इसके ऊपर हमारे पास phloem vessels आई हुई हैं. ठीक है. इसके बीच में हमारे पास कॉर्टेक्स आ जाएगा, एंडर्मिस आएगा, फिर कॉर्टेक्स आएगा, फिर एपिडर्मिस आ जाएगा. सो स्टेम इस तरीके से दिखती है. आई डोंट थिंक आई हैव अ पिक्चर ऑफ द डाइकॉट रूट, बट आई डिड सर्च फॉर इट. It should be here. Mm, dicot root micrograph. This is the one that I want to talk about, right? So. Now, this is basically how this root is like. ठीक है. अब अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये बीच में X वाला वो है. ठीक है. तो that is the xylem vessel surrounded by the vascular bundle or the phloem vessels, right? Make sense? Again, I don't know if you guys read Pirates of the Caribbean or not. I've been reading Pirates of the Caribbean, Jack Sparrow. So I'm like on the 12th part of it, right? It's called as The Sins of the Father. It's Captain Teague, if you guys know Jack Sparrow or stuff. तो खैर, अच्छा बीच में क्या? सर जो बीच में है ये कुछ नहीं बेटे, देर ऑल जाइलम वेसल्स. जो बीच में बस क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर है ना ये पूरा. दूसरा वाला तुम मुझसे पूछ रही हो,
That's these cells, these pit cells, they are there as a packing tissue that actually provides support, right? Acha ji. Now, moving on. So this is how this goes, right? So हमें बस ये पता होना चाहिए. अब again देखो एक चीज हम लोग क्या देखते हैं, जिस तरीके से उस डायग्राम के अंदर हुआ था, I made it like a plus. It could also act as a, or exist as a cross like this. अगर होती है करके देखो तो cross हो जाएगा, like we saw in this particular picture. ठीक है? This one. And usually I draw it as a plus. It's easier for me to draw. ठीक है? खैर, come back here. Now आखिरी चीज देखते हैं हम लोग. Uh, okay, story time. So when I was a kid, when I was like in kindergarten, I guess, my school had a cage full of rabbits. So my mom, because she knew that, there were rabbits, so she used to give me this lunchbox full of carrots, right? So I could just go and interact with the rabbits and, feed them. I used to eat the carrots myself as well. I like carrots. So before giving carrots to me, or, before letting me feed the bunnies those carrots, my mom used to peel them, right? अगर हम लोग बात करें carrots की, radishes are मूली, if we would talk about turnips, all of these veggies that we have, they grow under the soil. They technically act as, what? As roots. Whenever our moms are going to, give, give us these veggies to eat, they would do is they would peel them. तो वो peel करके what are they removing? You know, all of these veggies, they have these hair-like structures coming out of them. These hair-like structures are basically the root hair cells, right? So what is this? This is the root hair cell, and the layer formed by the root hair cells is called as piliformis, right? तो अगर हम carrots को देखें ना, तो carrots उसके ऊपर मतलब they're scraped off, not peeled, but they're scraped off, right? So uh the part of the carrot that we eat is that the taste wala part that tastes good is basically the cortex where all the nutrients are stored, right? While aloo are tubers, aloo का case different है. तो खैर they're not going to absorb the they act as underground storage organs, वो tubers होता है. खैर, so and the carrots are full of water as well, right? उसके बीच के अंदर एक yellow color का part आ रहा होता है, right? That's basically the vascular bundle in the carrot, right? वो tasteless होता है. It's very hard सा, it's very tasteless सा. ठीक है? Okay, now अब देखो, we know that whatever the roots that we have, they are surrounded by the soil. अब जब भी हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के बारे में बात करते हैं ना, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हमारे पास तीन तरीकों से, या इट टेक्स थ्री वेज for the water to be transported, right? So it or other three sub stages, so that would go all the way from the soil towards the leaves, right? So when we talk about transport of water, where are the plants getting their water from? Or let's say if I had to give water to the plants, मैं direct उसको जाके पानी पिलाऊंगा नहीं उसे glass में. I'm not going to present the plant with a glass full of water. Neither I'm going to give it to the roots. What we are doing is we're actually putting the water in the soil. तो सबसे पहले हमारे पास जो water molecules होते हैं, वो soil से किधर जाते हैं? They go from the soil to the root hair cell. ठीक है? Now, once inside the root hair cell, they have to go all the way into the xylem vessel. Now, while the water molecules are going to be traveling towards the xylem vessels, they would have to cross the epidermis, the cortex, the endodermis. Only then, flowing को हम लोग discard करें 2 मिनट के लिए. Only then they're going to, go inside the xylem vessels. All right. So once they have been absorbed from into the root hair cell, from the root hair cell, they go towards where? They go towards the xylem vessels. All right.
And once in the xylem vessels, they go towards the leaves, right? And this process that works against the gravity, pulling the water upwards, is called as transpiration. Okay? So this is how we're going to talk, or these are the three subheadings that we're going to talk about as we're going to proceed with the topic, right? So right now, the very first thing that we're going to do, we've already done it when we were talking about diffusion, osmosis, and active transport. We're just going to do it one more time. So let's talk about the very first part. Let's talk about the movement of water from the soil to the root hair cell of the. If you were to talk about a root hair cells हमारे पास कैसे cells होते हैं? They are rectangular cells. So the root hair cells are rectangular cells, right? Now these rectangular cells, they would also have a cell membrane, right? And obviously they're also going to have a large central vacuole. अब होता हमारे पास क्या है? Besides this, they have an adaptation. इनको तो अपना इनको तो absorption करनी है ना? To increase that absorption, they are going to increase their surface area to volume ratio. For that, to increase the surface area to volume ratio, इनके पास एक hair like extension आती है. So what they have is a hair like extension, which is also called as root hair. ठीक है? ये hair like extension क्या करती है? It increases the surface area to volume ratio. किस चीज के लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए, फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है? अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास सेल वॉल इस रूट हेयर में आ रही है, तो सेल मेम्ब्रेन भी एक्सटेंड करती है ऑल थ्रू आउट. मैं थोड़ा सा दूर बना रहा हूँ अवे फ्रॉम द सेल वॉल बिकॉज आई नीड दैट स्पेस. एंड ऑब्वियसली द लार्ज परमानेंट वैक्यूल आल्सो गोज ऑल द वे इन, लेकिन आई एम जस्ट पुलिंग इट बैक ऑफ. मैं पूरा आई एम नॉट letting the root large central vacuole go all the way till here, क्योंकि अभी आई नीड दिस स्पेस. ठीक है? अच्छा, अब एक चीज देखिए. All of this root hair cell is basically surrounded by what? It is surrounded by the soil. ठीक है? Inside the root hair cell, obviously we're going to have the cytoplasm. तो यहाँ पूरा cytoplasm है हमारे पास. Inside the cytoplasm, we'll have organelles such as the nucleus, such as the ribosomes. One organelle that would be in abundance is going to be the mitochondria. हमारे पास रूट हेयर सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनल सबसे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है कंपेरेटिवली, वो क्या होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है. विल द रूट हेयर सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट? क्या रूट हेयर सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा? सो होगा. सो कुमेल सेज यस होगा. ठीक है, एवरीवन एल्स सेज नो. मुझे एक बात ही बताओ कुमेल बचा, वेयर आर द रूट्स? आर दे अबव द सॉइल और आर दे अंडर द सॉइल? They are under the soil, right? So will the sunlight reach or can the sunlight cross the soil or the ground? No, तो भाई वहाँ light आ ही नहीं रही, because there is no light going under the soil. The root hair cells are not going to have chloroplast. ठीक है, ये बात याद रखिएगा. रूट हेयर सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, राइट? अच्छा, the root, because the space inside the root hair cell, the volume of the root hair cell is very small. अगर इसमें थोड़े से भी मिनरल आयंस आएंगे ना, the root hair cell is going to be very concentrated. And this happens, पता है? रूट हेयर सेल्स के अंदर मिनरल आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है. There's a high concentration of mineral ions inside the root hair cells. In the soil,
क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, रूट हेयर्स, सॉरी, द मिनरल आयंस आर स्कैटर्ड, राइट। तो इस वजह से सॉइल के अंदर मिनरल आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट द रूट हेयर सेल्स आर ग्रीडी, वो कहते हैं कि आई वांट दीज मिनरल आयंस, आई स्टिल वांट दीज मिनरल आयंस even if they're in a lower concentration in the soil. So is there a way through which these root hair cells can pick up these mineral ions from a region of low concentration towards the region of high concentration? Very good. So they're going to be transported, or they're going to be moved into the root hair cell through active ट्रांसपोर्ट। वेरी गुड। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए मुझे दो चीजें चाहिए। सबसे पहले तो मुझे एनर्जी चाहिए, फॉर विच रीजन हमारे पास रूट हेयर सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बहुत अबंडेंट है, ठीक है। द सेकेंड थिंग दैट आई नीड इज व्हाट, एक और चीज चाहिए होती है मुझे एनर्जी के अलावा। वी हैव सम प्रोटीन्स, व्हाट डू वी कॉल दोस प्रोटीन्स? We call these proteins as carrier proteins. ठीक है, अब इसको देखो 2 मिनट के लिए। ये हम लोगों ने कहाँ देखा था? We talked about this when we were talking about diffusion, osmosis and active transport. हम लोगों ने बात करी थी कि भाई what is active transport? The movement of particles from a region of low concentration to high through कौन से वाले proteins? Through carrier proteins. Don't forget this. Don't forget your carrier proteins. Don't lose a mark just because of the single word, right? So again, what happens is हमारे पास the root hair cells, they absorb mineral ions against the concentration gradient. If I'm saying against the concentration gradient, what I mean is from region of low to high concentration. ठीक है? At the very same time, I'm using two things to do that. I'm using carrier proteins and I'm using energy from the mitochondria, right? So these root hair cells, they pick up mineral ions through the carrier proteins. कौन से वाले ions, to be more specific? Nitrate ions, right? Why nitrate ions? Because they're used to build up the amino acids. Besides the nitrate ions, हमारे पास root hair cells को हम कौन से वाले ions absorb करेंगे? ज़्यादातर magnesium ions to make their chlorophyll, right? So these ions are transported through active transport from the soil where they're at a lower concentration into the cytoplasm of the root hair cell where they're in a higher concentration through the carrier proteins using energy from the mitochondria through aerobic respiration, or which is produced through aerobic respiration. Make sense? बात समझ में आ रही है यहाँ तक सबको? यहाँ तक कोई मसला? Any problem so far? अच्छा, अब मुझे एक बात ही बताओ, are mineral ions soluble in water? Are they water soluble? Are you guys focused here? So, all right. No, they're not. देखो, I'm asking again. Mineral ions, right? They're ions. Would they be soluble in water? Yes, they would be. All ions are, right? Ions are soluble. All ionic compounds soluble in water. So ions are indeed soluble in water. ठीक है? Now, since they're soluble in water, would you consider them to be solutes or not? So if ions are soluble in water, would you consider them to be solutes? Yes, you would. Very good, Kamal. ठीक है? Anything that is soluble in water is a solute. अब मुझे एक बात ही बताओ, सॉइल में से सॉल्यूट्स रिमूव हो रहे हैं या सॉल्यूट्स ऐड अप हो रहे हैं? So again, the mineral ions are acting as solute. Solute is anything that is soluble in water. Mineral ions are soluble in water. तो ये जो मिनरल आयंस हमारे पास सॉइल के अंदर हैं,
क्या वो सॉइल से रिमूव हो रहे हैं या सॉइल के अंदर एड अप हो रहे हैं? So these mineral ions अभी हम लोगों ने बात करी, they're actively transported inside the root hair cells, right? So are they being removed or are they being added in the soil? They're being removed in the soil. Very good. Right? They're being removed from the soil, मेरा बेटा. ठीक है? Now, so if the solute concentration in the soil is decreasing, तो soil का water potential क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. ठीक है? So again, जब भी हमारे पास solute concentration कम हो जाएगी compared to water molecules, तो water potential बढ़ जाएगा. अब मुझे पता है कि भाई मेरे पास soil के अंदर water molecules भी हैं. Right? Acha. So what's happening is because of the removal of the mineral ions, the water or the solutes from the soil, the water potential inside the soil keeps on increasing. Where are you putting these solutes? You're putting these solutes into the cytoplasm. Mineral ions की concentration और बढ़ती जा रही है. तो हमारे पास water potential inside the root hair cell क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. WP stands for the water potential, right? So now water molecules are going to move from the soil into the root hair cell from a region of higher water potential towards a region of lower water potential by the process of osmosis. Are we getting this? So this is how the root hair cells are basically absorbing water. ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? Make sense? All right, good enough, good enough, good enough, good enough. तो अब अगर हम लोग जैसे if they would ask us to describe this, तो तुम क्या बताओगे? You can describe the whole process. तो हम बता देंगे कि the root hair cells actively transport mineral ions from the soil where they are at a lower concentration into their cytoplasm where the concentration of ions is high, using energy through using energy or and through via carrier proteins by the process of active transport. Make sense? यहाँ तक पास समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई मसला? Okay, now ठीक है. अच्छा, अब इससे क्या होता है? This decreases the what? The water potential inside what? Inside the root hair cells. So water molecules from the soil move in by
the process of osmosis. ठीक है, यहां तक कोई मसला? Does anyone have any problems with this? Any problems at all, guys? Okay, all right. Now, so now that we know this, अब एक आखिरी चीज और देखते हैं हम लोग, एक आखिरी चीज और देखते हैं before we talk about the movement of water molecules from the root, अब root hair cell में आगे तो xylem में कैसे जाएगा, उससे पहले let's talk a bit about the xylem vessels. Okay. अब अगर हम लोग xylem vessels के बारे में बात करते हैं, देखो होता क्या है कि xylem vessels की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है? Like when the saplings they grow, जब saplings हमारे पास soil से करीब होती है ना, sapling is a new plant, उनके और soil के बीच में distance कम होता है, तो water can be taken up through osmosis very easily. But when the plants grow, उनको एक pump चाहिए होता है because the distance between the leaves and the soil it increases. So what do? ये कुछ सेल्स होते हैं इनके, उनकी सेल वॉल्स के अंदर ही एक वैक्स डिपॉजिट करना शुरू कर देता है. Now that wax is called as lignin, right? Now when that lignin is deposited, what happens is lignin एक तो एक wax है, waxes are made up of lipids and lipids are insoluble in water. तो होता क्या है, हमारे पास एक ऐसी वेसल आ जाती है which in cross section would look like this. राइट. तो जब भी हम लोग जाइलम वेसल के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले चीज हम लोग क्या देखते हैं, इट हैज लिग्निफाइड लिग्निन डिपॉजिटेड सेल वॉल्स, राइट. अच्छा, अब लिग्निन, फॉर एग्जांपल वी हैव हेयर जेल्स आर इनिशियली दे आर जेली लाइक, बट व्हेन यू अप्लाई देम ऑन योर हेयर इट ड्राइज आउट, ठीक है, वो सख्त हो जाता है. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि लिग्निन भी इट सॉलिडिफाइज ओवर टाइम, ठीक है. नाउ लेकिन कुछ स्पेसेस होते हैं बीच के अंदर जहां लिग्निन डिपॉजिट नहीं होता. दीज आर एम्प्टी स्पेसेस. अगर जाइलम वेसल कंप्लीटली लिग्निफाइड हो जाती है ना, कहने का मकसद क्या हुआ, फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं एक और जाइलम वेसल बनाऊं एंड इफ आई वुड नॉट कट इट इन हाफ, अगर मैं उसको बाहर से देखूं, तो बाहर से हमारे पास ये जाइलम वेसल इट्स कंप्लीटली लिग्निफाइड, राइट. पूरी अगर हम लोग इसको बाहर से देखें, जस्ट लाइक अ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ में होल्स नहीं होते ना, तो इस तरीके से ये स्ट्रॉ पोरस नहीं होती हमारे पास, इसी तरीके से ये भी कंप्लीटली लिग्निफाइड होती है, ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास होता क्या है कि इन राइट इन द मिडल एट डिफरेंट प्लेसेस हमारे पास के अंदर होल्स आ जाते हैं. व्हाई आर द होल्स हियर? सो दैट द वाटर मॉलिक्यूल्स कैन गेट इन, वरना जाइलम वेसल फिल कैसे होंगी? These spaces are called as what? They are called as pits, right? ठीक है. No, Hulk does not photosynthesize, that's because of gamma radiation. तो खैर, pits क्या करती हैं? Pits, they allow entry of water. So we can have the pits here. ठीक है, ये भी pits है हमारे पास. Make sense? So this is how the xylem vessel basically looks like. So we'll stop here today. In the next class, uh, we're going to talk about how the water molecules move from the region, from the root cells into the xylem vessels, and then we'll talk about how it's going to go. We're going to talk about some properties of water. Then we'll talk about how the water molecules are going to go all the way up towards the leaves. Hope you guys have a good day.